So how to construct, we are discussing how to construct a total revenue, average revenue and marginal revenue curves when there is a relationship between price and quantity demand. So as we know, relationship between price and quantity demand is shown by the law of demand. So from law of demand, we can get the relationship between price and quantity demand. As we know, this total revenue is PQ. So total revenue is P multiplied by Q. This is total revenue. So when we have total revenue, we can calculate average revenue. Average revenue is total revenue divided by Q. इसी तरह जब टोटल रेवेन्यू हमारे पास है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू हमारे टोटल रेवेन्यू में कितनी चेंज आ गई. So you start, for example, if our price of the product is 10, you write down the price of the product is 10. And for example, quantity demand is 1 or quantity sold is 1. जितना डिमांड हुआ इतना ही प्रोड्यूसर ने सेल किया. So total revenue कितना बन गया? 10 multiplied by 1, it is 10. Okay, it is 10. अगर प्राइस हम डिक्रीज करेंगे 2, अगर प्राइस हम डिक्रीज करेंगे, सॉरी 9, प्राइस हम डिक्रीज करेंगे फ्रॉम 10 to 9, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा टू 2. अगर फिर से ये कम होगा 8, it is 3, 7, it is 4, 6, it is 5, 5, it is 6, 4, it is 7. इसी तरह you go on. 3, as price falls, quantity demand increases. 2, ये 9 है, 1, ये 10 है. ओके, सो अब इसमें से हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू. 9 2 18, 26, 28, 6 35, 6 30, 4 7 28. बेसिकली इस टेबल से हमें बनाना है रेवेन्यू कर्व्स, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व्स. 24, 18 and 10. So this is how to estimate or calculate total revenue from price and quantity sold or quantity demanded. Now how to calculate average revenue, वो भी हमने कल किया है. It is total revenue divided by Q. 10 divided by 1, it is 10. 18 divided by 2, it is 9. 24 divided by 3, it is 8. So this column, average revenue column, is same as price column. As we know, price is same as average revenue. This is here 7, 6, 5, 30 by 6, 28 by 7, it is 4, 24 by 3, 8, it is 3, 18 divided by 9, it is 2, 10 divided by 10, it is 1. Now, what is marginal revenue? Is total revenue, change in total revenue divided by Q, change in total revenue. 10, difference between 10 and 18. इनमें क्या फर्क है? That is change in total revenue. Change in total revenue. 18 minus 10, it is 18 minus 10, it is 8. 8, it is 6, it is 4 here. 28 minus 24, 30 minus this 2, it is 0. 30 minus 30, it is minus 2, it is minus 4, it is minus 6, and this is minus 8. So this is marginal revenue. Now how to construct revenue curves? Now how to construct the revenue curves? किस तरह हम revenue curve, बेसिक मसला हमारा आज का यही है, आज का टॉपिक हमारा यही है कि किस तरह हम revenue curves construct करेंगे. ये 0 है यहाँ पे. टोटल रेवेन्यू क्या है लास्ट पे? 30. 5, 10, 15, 20,
25 30, इसी तरह -5 -10। इस एक्सिस पे हम दिखाएंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इस एक्सिस पे हम दिखाएंगे क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड और लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड। इसको मैं 1 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ओके, तो अब हम पहले टोटल रेवेन्यू बनाएंगे बिटवीन क्यू एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड टोटल रेवेन्यू। 1 and 10, दिस इज 1 and 10, ये पॉइंट यहां आएगा। 2 and 18, 2 and 18, 3 and 24, 3 and 24, 4 and 28, 4 and 28, 5 and 30, okay, 5 and 30, 6 and 30, 6 and 30, 7 and 28, 7 and 28, 7 and 28, 8 and 24, 8 and 24, 8 and 24, 9 and 18, 10 and 10. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। This is total revenue curve. This is our total revenue curve. Okay. This is total revenue curve. So it first increases, reaches maximum, and then falls. अब हम एवरेज रेवेन्यू बनाएंगे। यहां पर जब एवरेज रेवेन्यूज फॉर एग्जांपल 0 पे आता है, टोटल रेवेन्यू भी 0 पे आ जाएगा। देन दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज हियर। It is 1 and 10, 2 and 9, 3 and 8, 4 and 7, 5 and 6, 6 and 5. Average revenue 7 and 4, 8 and 3, 9, 2, 10 and 1. 1 and 10, ये बोला 1 and 10, ये यहाँ है। 2 and 9, 2 and 9, 3 and 8, 3 and 8. 3 and 8. और क्या है? 4 and 7. 5 and 6. 5 and 6. 6 and 5. ऊपर ऊपर करेंगे, यहाँ उतना अंदाजा नहीं है मुझे। 7 and 4. सॉरी, ये ठीक नहीं बना। 1 and 10, ये पॉइंट है। 2 and 9,
3 and 8, 4 and 7, 5 and 6, 6 and 5, 7 and 4, फिर 7 and 4, 8 and 3, 8 and 3, 8 and 3, 9 and 2, 9 and 2, 10 and 1, 10 and 1. ये ऐसी बन गई कर्व। अगर 11 हम लगाएंगे 11 पे ये 0 पे आएगा, ये ऐसे आएगा, 0 पे आएगा। इसी तरह ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व। अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे, इट इज 1 and 8, 2 and 6, 1 पे नहीं है, 2 पे है 8, 2 पे है 8, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 है। 2 पे हम शुरू करेंगे, 2 पे है 8, 8, फिर 3 पे है 6, 3 पे है 6, फिर 4 पे है 4, 3 पे है 6, 4 पे है 4, 4 पे 4, 5 पे 2 है, 6 पे 0 है, 6 पे 0 है, फिर 7 पे -2 है, 7 पे -2 है, नीचे जाएंगे, नीचे -2 है, 7 पे -2 है, 8 पे -4 है, 8 पे -4 है, 9 पे -6 है, 10 पे -8 है, 10 पे -8, इनको ज्वाइन कर दीजिए। This is marginal revenue curve. This is marginal revenue curve. So this is how to construct the average revenue, marginal revenue, and total revenue curves in a monopolistic market. This is not perfect competition market. In the perfect competition market, a firm is facing a horizontal revenue curve, average revenue and marginal revenue, that we will discuss later on. So this is simply what I am going to tell you here, how to construct the revenue curves, total revenue, average revenue, and marginal revenue curves from relationship between total revenue and output, average revenue and output, and marginal revenue and output sold. So how total revenue changes when output sold changes, when sales change, how average revenue changes when output sold changes. So we see, as a seller or producer increases his sales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, his total revenue first increases, then remains constant, and finally diminishes, as shown from the total revenue curve. So far average revenue is concerned, this also decreases. The average revenue decreases as sales decrease, because to sales increase, when a seller wishes to sell more and more, he or she has to decrease the prices. The marginal revenue also follows as total quantity sold falls. Now, what are the results which we get from this table and diagram?
The result is very simple result is we can say up to a certain point or up to the level of 5, up to the level of 5 output level, the total revenue increases. Then it remains the same, and from this output level 6, the total revenue falls. We can write down it like this. From table and diagram, we see the total revenue first increases. First increases, but at decreasing rate. But at decreasing rate, then it, that is, then total revenue reaches maximum. Reaches maximum, that is at point 6. At point 6 here, when marginal revenue is 0, then finally this total revenue, then finally the total revenue falls when marginal revenue becomes negative. So when marginal revenue starts becoming negative after level of output 6, the total revenue falls. The average revenue continuously falls. The average revenue continuously fall, that is, as level of output sold increases. So why it falls when output level sold increases? Because a firm can sell more and more output at less price. More and more output at less price. When a firm decreases its price, then it can increase its market share. When a firm decreases its price, that means decreases its average revenue, a firm can sell more and more. So this is all about how to construct different revenue curves for a firm in the monopoly or monopolistic market. In a monopolistic market, in the perfect market, we will discuss that later on. What is the shape of revenue curves in perfect market or in different types of markets? So this was simply a lecture on how to construct the revenue curves when price and output sold changes. When output sold changes, how total revenue behaves. It first increases, but at decreasing rate. It reaches maximum. It remains constant for some time, and ultimately it falls. The average revenue continuously fall from output level 1 beyond output level 1. The marginal revenue also falls. So this is all about average revenue, marginal revenue, and total revenue curves. In the next lecture, tomorrow, we will discuss the relationship between total revenue and marginal revenue, average revenue and marginal revenue. Thank you very much. कोई question? अथर? No sir. No sir. समझ आ गया ये किस तरह? Yes sir. किस तरह ये कंस्ट्रक्ट करना है? खाली टेबल याद रखना है? Yes sir. तो मैंने टेबल आपको दे दिया ना,
ये प्राइस Yes, एंड sir. क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी है, Yes, sir. क्वांटिटी, हाँ, प्राइस फॉलोज 10 9 8 7 6 है, ये Yes, क्वांटिटी, sir. क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस 1 2 3 4 5, फिर आपका टोटल रेवेन्यू खुद निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू खुद आएगा, मार्जिन रेवेन्यू खुद आएगा। एवरेज रेवेन्यू इज पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, Q. यस। Yes, sir. ये कॉलम जब आ गया तो फिर ग्राफ पे क्वांटिटी सोल्ड, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वाई एक्सिस पे फिर बनाना। ये करो, ये आसान सी करो। ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच है। कल Okay, जो sir. मैंने दे दिया ना, वो बनाया आपने, टेबल मैंने जो दे दिया आपको, मैंने आपको बताया कि Yes, sir. इसमें से टोटल एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर दीजिए। आज आप देखना घर में व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, कल तैयार होना चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले ही वो पता होना चाहिए। यूट्यूब पे देखना या किताब पे देखना, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। ये आप यूट्यूब पे या किताब भी है बिल्कुल अच्छी सी, हर किताब पे है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।